So in the last lecture, we saw the covalent radius. We are going to look at the different other types of radius. Basic definitions only, not too much conceptual part is going on here. Then we are going to look at the periodic trends and atomic radius. That is going to be very important. Okay. यहाँ पे लिखेगा आपका metallic radius. Metallic radius will be 1/2 distance between two adjacent atoms of a metal in metallic bond or in metallic lattice. कर दीजिए समझा देंगे क्या होता है metallic lattice. In metallic lattice. The last class में हमने क्या किया था? Covalent, right? We did covalent radius. Don't draw this now. ठीक है, अभी इसको draw मत कीजिए. ठीक है. This is a snapshot of the metal atom. The parts of the metal atom will be present in a lattice. So there is one metal atom, but इसका यहाँ पे nucleus, and these two will be. This is the distance between the two. This is the distance between the two adjacent atoms of a metal. Okay. This distance where हम d लेंगे. This distance is d. Then we can say that the metallic radius कैसे calculate होता है? Whatever this d is, that is metallic bond. जो भी metallic bond होगा, divide by 2. This will give you an idea about metallic radius. So one more point we can write in comparison to the covalent radius. In the covalent radius, there is overlapping of orbitals. And यहाँ पे लिखिएगा as there is no overlapping of orbitals. Metallic radius, it is greater than covalent radius. So if we have an atom, जिसका metallic radius भी calculate किया जा सकता है, covalent radius भी calculate किया जा सकता है, then in that case, what is going to happen? The metallic radius will be greater than the measurement of covalent radius. It is only because the way how we are measuring it. By definition, metallic radius will be greater than covalent radius. Please copy this down, raise your hand once you're done. Please raise your hand once you're done.
Waiting for Jovita and Sabiha. For Jovita and Sabiha. Waiting for Sabiha now. Sabiha, please write it quickly and raise your hand once you are done. Sabiha, Sabiha, please let me know if you are not done. क्या टाइमिंग लगेगा? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा वैंडर वॉल रेडियस. Now, how is van der Waal radius measured or calculated? See, here we have an atom. Okay. Let us suppose this is helium. Obviously, helium atom will be not very close together because helium is a gas. These molecules will be very far apart. These will be very far apart. Even though we measure the van der Waal radius in solid state, we cannot say that helium solid will be equivalent to that of sodium solid or like iron, how strongly bonded iron atoms are there. So what we show that the van der Waal radius that is measured when the atoms are at a bit of distance. And let us suppose this is the distance between the nuclei of these two atoms. Okay, so this is the distance between the nuclei of the two atoms. So van der Waal radius will be equal to d by 2. Another case is that we can have molecules and we can measure the van der Waal radius of molecules also. Let us suppose this is one molecule, not one molecule, one atom, and this is another atom. These two atoms are making a molecule. These two atoms are making a molecule. Now we can have another molecule. And when we measure the distance between the closest nuclei of these two molecules, there are 4 atoms here, right? There are 4 atoms, but we are going to take those atoms which are closest to each other. And if we measure the distance between the nuclei, the two closest nuclei, and let us suppose this is B, then the van der Waal radius for this molecule will be d by 2. Now, how the definition goes? The definition goes like this: 1/2 of internuclear, 1/2 of internuclear distance between nuclei of two adjacent atoms of a substance belonging to neighboring molecules in solid state. Now, as you can see, by definition, van der Waal radius is going to be larger than the metallic and the covalent radius. So, van der Waal radius, it is the largest by definition, followed by metallic radius, and the smallest by definition is going to be the covalent radius. Please copy this down, raise your hand once you're done.
Raise your hand once you're done. जो पिता तस्वीर सभी हाजिर हैं. Waiting for Jupiter, Jasmine, and Sabina. Waiting for Jasmine and Sabina. Sabina, it seems you are not in class. Sabina, can you please reply in the chat somewhere else also? हाँ because आप नहीं आते थे क्लास पे चलिए नहीं we will write it. See, I've just defined the atomic radius. कुछ खास क्या से नहीं आने वाला लेकिन ask you the definition of atomic radius. They can ask very rarely. But main conceptual part is going to start here. Please write periodic trends in atomic radius. In atomic radius. So first of all, you will see is atomic radius here will be directly proportional to the shell number. If you are in the first shell, it will be small. If you are in the second shell, that means if an atom is only having one shell, that atom will be small. If an atom is having two shells, that will be large, three shells, not just four shells, even more. So atomic radius will be directly proportional to the shell number. And shell number is told by the principal quantum number. We have or n. The principal quantum number or n. Therefore, what we can say, atomic radius in this means you can't hear me at all. Am I audible, guys? Will somebody please tell me yes or no? Sabina, Yes, sir. So what will happen to atomic radius? Atomic radius will increase on going top to bottom in a group. In a group, if you go from top to bottom, my voice is kind of low. Just give me a second here. Give me a second. Give me a second. How about now? How is it now? Tell me, how is it now? Yeah, I hope it is better now. Sir, it's better now. Okay. So atomic radius will increase on going top to bottom in a group because so if we go top to bottom in a group, then only one thing changes, that is the shell number. Or कुछ भी नहीं होता. If you remember, we have talked about the effective nuclear charge. The effective nuclear charge is going to be constant down the group. It's not changing. So only thing that changes if we go down the group is the shell number.
नेक्स्ट थिंग हम बात कर सकते हैं एटॉमिक रेडियस। एक बार बताइए, here we have a positive charge and here we are having the electrons. If the positive charge is high, it will attract the electrons closer to itself. Yes or no, please tell me. If the positive charge is high, it will attract the electrons closer. Yes or no? Yes, sir. है ना? So if the positive charge is high, then what is going to happen? If it's going to attract the electrons closer to the nucleus, then the atomic size will increase or decrease. बताइए, ये अगर नजदीक आ जाएगा, if this will be closer to the nucleus, the atomic size will decrease. So we can see that atomic radius, it is inversely proportional to the Z effective. Basically, that positive charge on the outermost electron, it is called by and it is determined by Z effective. If Z effective is high, it will pull the electron closer to the nucleus, and that will make the atomic radius small. So we can write here as Z effective increases, attraction between nucleus and outermost electron increases. Therefore, the electron is nearer to nucleus. Therefore, atomic radius decreases. Hence, we can say, if we go in a period, from left to right in a period, from left to right in a period, from left to right in a period, atomic radius decreases. Because वहां पे क्या होता है? The shell is not changing. What is happening to the effective nuclear charge? आगे अगर देखिएगा, the effective nuclear charge increases if you go from left to right in a period. Can somebody flip some pages and see what you have written for the period part? Effective nuclear charge increases along a period. देखिए, if effective nuclear charge is increasing, atomic radius will decrease. I hope that makes sense. Yes, sir. है ना? ठीक है, चलिए raise your hand if you're done. These are general trends. है ना? ट्रेंड के बारे में एक चीज आप ध्यान रखिएगा, प्लीज ऑल ऑफ यू गाइस. ट्रेंड के बारे में प्लीज सब कुछ सुनिएगा, है ना? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कंसेप्चुअली अंडरस्टैंड व्हाट इज द ट्रेंड. तो पीरियोडिक ट्रेंड क्या है? इफ आई गो, ऊपर से नीचे जाने पे क्या होना चाहिए? इट शुड इंक्रीज, एंड लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होना चाहिए? डिक्रीज. इफ आई एम गोइंग लेफ्ट टू राइट, एंड अगर मैं आपसे पूछूं ये कैसा ट्रेंड है, सो व्हाट टाइप ऑफ ट्रेंड इज दिस? टेल मी गाइस. डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ट्रेंड? अगर स्टॉक है किसी, इसका स्टॉक है, द स्टॉक का ग्राफ ऐसे टाइम के रिस्पेक्ट में, दिस इज द कॉस्ट ऑफ स्टॉक एंड दिस इज द टाइम. क्या बोलिएगा? स्टॉक का प्राइस ग्रेजुअली क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है? Decreasing. बोलो. डिक्रीजिंग. डिक्रीज कर रहा है. बट बोलेगा नहीं, कोई बोलेगा नहीं, देखिए यहाँ पे तो इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे तो इंक्रीज कर रहा है. दैट इज ट्रू, दैट इज एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कहीं पे इंक्रीज कर सकता है, बट दैट डज नॉट चेंज द ट्रेंड. दैट समझ में आ रही है? यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो, प्लीज टेल मी. Yes, sir. Yes, sir. है ना? तो प्लीज देखिए, इस चीज को मत समझिएगा लाइक ये ऐसा रूल या फिर लॉ नहीं है, ऐसा ना. लॉ डज नॉट चेंज, ट्रेंड्स हो गए. इवन रूल जो है ना, रूल भी थोड़ा सा चेंज किया जाता है. रूल तोड़ने के लिए तो मतलब लॉ नहीं टूटता. लाइक द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दीज लॉज विल नॉट बी ब्रोकन. ठीक है, अगर कोई मैथमेटिकल लॉ है तो लॉ ब्रेक नहीं करेगा. बट इफ यू हैव ट्रेंड समथिंग लाइक दैट, तो ट्रेंड ऑब्जर्वेशन बना रहा है, तो इसमें बीच में ऐसे उठ भी सकता है बहुत ज्यादा. यू कैन हैव ऐसे बीच में ऐसे उठ भी सकता है, तो फिर डाउन आएगा, गिर गिर. इवन दो दिस इज आल्सो व्हाट, दिस इज आल्सो अ डिक्रीजिंग ट्रेंड, बट एक जगह उठ गया, बट दैट डज नॉट चेंज द ट्रेंड. उसकी वजह से ट्रेंड चेंज नहीं हो जाएगा. राइट? चलिए, इस चीज से आपको पता चलेगा जो एक्सेप्शंस के नाम पे जो मतलब कोई टीचर कहता है एक्सेप्शन है, या फिर डिक्रीज इंक्रीज कर रहा है लेकिन डिक्रीज कर जाएगा अचानक से, है कोई चीज डिक्रीज कर रही अचानक से इंक्रीज कर जाएगी. So that all of these things are possible, and all of these things are in the trend of, ट्रेंड से बाहर नहीं जाता. ठीक है,
चलिए मूविंग ऑन। एक पॉइंट अब ये लिख सकते हैं, देखिए लेफ्ट टू राइट अगर जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस शुड डिक्रीज, बट वेरी इंपॉर्टेंट नोट इज दैट for noble gases, their van der Waal radius exists. ठीक है, अगर ओनली देयर, ओनली कर दीजिए, ओनली देयर van der Waal radius exists, therefore along the period respective noble gases has largest atomic radius. Has largest atomic radius. Am I lagging for everyone? Suddenly it's just me. Am I lagging, guys? Let me No, read this. sir. No, For noble, no. For no, noble sir. gases, only their van der Waal radius exists, and van der Waal radius by definition is going to be large. That is why, according to the trend, आपको लगना चाहिए कि from left to right in the period, the atomic radius should decrease, and in the end of a period, we will always get a noble gas. So that noble gas should have the least atomic radius, but that is not true because noble gases के लिए van der Waal radius and van der Waal radius by definition is what? By definition, it is van der Waal radius by definition it is larger. So this is the topic here. Everyone is done. Guys, please raise your hand if you're done. ठीक है, तो कुछ सवाल कर लेते हैं. Let's do some questions. I hope periodic table आपको अंदाजा होगा ना. ठीक है, I hope you have some idea about the periodic table. थोड़ा तो आपने पढ़ा होगा. If you are just reading also, then also you will be able to recognize the elements along a period, है ना, और down the group किस तरह से arrange किया हुआ है वो आप पता कर सकते हैं. चलिए, ये बताइए जरा. सोडियम रुबिडियम करके करते हैं, बताइए. इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस.
नो चाइना। इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना, आपको उल्टा ही करते हैं सर। इंक्रीजिंग सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा बड़ा कौन हो? इट विल बी द लार्जेस्ट। नो, नॉट रियली। थोड़ा अरेंज कीजिए ना, थोड़ा अरेंज कीजिए। मतलब राइट इन द पीरियोडिक टेबल में कौन किसके अगल बगल होगा, कौन किसके बगल में होगा, कौन किसके नीचे होगा, उस तरह से लिखने की कोशिश कीजिए जरा। ट्राई टू राइट इन दैट मैनर। Like there are three elements of a single group. हाँ, Simon out is correct. थोड़ा सा टाइम और देंगे आप लोग को समझने के लिए। If you write it down ना, like periodic table में कौन कहाँ पे होगा, like which of the following are in the same group और किसके अगल बगल में कौन किसके नीचे, then you will be able to do it. Yes, correct Jovita, correct. ठीक है, I hope that helped. Yes, Jovita, that is correct. Just give me a few more seconds. ठीक है, देखिए जरा। So sodium, rubidium, and sodium, rubidium, potassium. All of these are in the same group. है ना? आपके पास ली ना करप N sodium, Na, potassium, rubidium. All of these three are not in the same group. और सोडियम के बगल में क्या है? मैग्नीशियम। If I compare here, then rubidium का सबसे ज्यादा होगा। Rubidium will be largest, biggest. ठीक है, छोटे से स्टार्ट करें तो छोटा यहाँ पे कौन होगा? दिस इज ग्रुप में हम नीचे नीचे जा रहे हैं। In all of these, sodium and magnesium will be smaller than potassium and rubidium because potassium and rubidium are in the next group, है ना? They are in the third period and the fourth period. इन दोनों में कौन ज्यादा छोटा होगा? इन दोनों में छोटा होगा आपका Mg, है ना? Because sodium will be larger because as we go along the period, then what is going to happen? The size decreases. So sodium ज्यादा बड़ा होगा। ठीक है, तो सबसे छोटा यहाँ पे कौन हो गया? Mg। Mg से स्टार्ट होने वाला ही कौन है? थर्ड नंबर। लेकिन फिर भी पूरा हम लोग देख लेते हैं। Mg and then you will have sodium. Sorry, Mg increasing sodium उसके बाद होगा and then you will have potassium and then you will have rubidium. ठीक, सोडियम और सोडियम से बड़ा कौन होगा? पोटेशियम बिकॉज नेक्स्ट ग्रुप, एंड पोटेशियम से बड़ा रुबिडियम बिकॉज नेक्स्ट ग्रुप। ठीक है, आई होप दैट मेक सेंस। ये डेफिनेशन का सवाल है कोवेलेंट और वैन डेर वाल्स रेडियाई का। कोवेलेंट और काफी आसान है ये वाला, है ना? ज्यादा हार्ड नहीं है ये वाला। दिस इज बाय डेफिनेशन व्हिच इज गोइंग टू बी लार्जर, कोवेलेंट या वैन डेर वाल्स। वैल्यू याद करने के लिए नहीं है यहाँ पे ना, यू डोंट हैव टू रिमेंबर द वैल्यूज। नहीं नहीं शायमा यार, ऐसी गलती नहीं करे ना। कौन बड़ा होता है, कोवेलेंट या वैन डेर वाल? कौन बड़ा होता है शायमा? Vanderbilt. वैन डेर वाल बड़ा होता है ना। फिर आपने देखिए क्या चूज किया है। चेंज द आंसर शायमा। Yes, sir. देखिए, हम लोग को बेसिक इतना पता है दैट if I compare covalent radius and van der Waal radius, then van der Waal radius is greater. अब उसके हिसाब से फिर आंसर करें। Yes, correct, Zan. Very good. Sir, I ignored the point and chose 37, which is greater. What? I ignored the decimal point. Oh, you've noted decimal. अच्छा, decimal ही नहीं लिखा।
Yes, Zainab, correct. Waiting for Jupiter. Just lean. You don't have to remember the data. You can just by the fact covalent radius will be smaller, van der Waal radius will be larger. You can answer this particular question. तो इतना टाइम मिलना चाहिए देखिए ये ऑप्शन होगा बिकॉज ऑप्शन ए में ही आपके पास द वैन डर वाल रेडियस इज ग्रेटर देन कोवेलेंट रेडियस बाकी में यहाँ पे भी बराबर थर्ड में बराबर फोर्थ केस में तो उल्टा ही है मेक सेंस जसलीन जोबिता यस और नो बात समझ में आई अरे बोलो भाई जोबिता एंड जसलीन नहीं क्या ये दोनों बताओ भाई ठीक है एक रिमार्क लिख लीजिए एम आई ऑडिबल गाइस आवाज आ रही है मेरी साइमा एंड Yes, जैनब sir. बताएं Yes, Yes. sir. जोबिता एंड जसलीन कहाँ चले गए आपको Yes, what happened? You are not answering the previous question. Yeah, yes, Jovita. So my phone got What? stuck. My Ah, phone got stuck. That's why. yeah, I got it. No problem. ठीक देखिए थोड़ा सा यहाँ पे समझने वाला पार्ट है तो अभी आप ज्यादा घबराइए मत एक एक लाइक थ्री सेक्शंस उसका नाम एक एक करके देखिए I hope you can recognize scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel, copper, zinc. These are the 3D series. Scandium will be 21 electronic configuration. It will be having 4s to 3d1. ठीक है titanium will be 32, 33, 34, so on. ठीक है now when we are at the initial stages of the 3D series, the d electrons are less. That is why screening effect भी कम है. Can you see? Z effect like consecutively, if you see the atomic number is increasing, with atomic number, the proton number will be increasing, and the proton number will increase, Z effect will also increase. But since the d electrons are less, screening effect उतना ज़्यादा नहीं है. As we move further and the d electron becomes 6, 7, 8, now at this point, Z effective and screening effect, they are almost. Now we move further. The screening effect here we have D9, D10. The case of D9 and D10, screening effect is dominant over the Z effective. And that's why the order of radius is also going to disturb. तो जहां पे Z effective ज्यादा होगा ठीक है जहां पे Z effective ज्यादा होगा वहां पे क्या होगा धीरे धीरे श्रिंक होगा साइज if you go from scandium to titanium to vanadium to chromium to manganese Z effective is increasing when the Z effective will increase the size will decrease and you can see that happening till here after iron cobalt nickel what is going to happen all of these will be having almost same size when I go from nickel to copper and zinc then the size will start to increase because Z effective is not anymore dominant. Screening effect is dominant. Screening effect में क्या होगा? The electron is not going to experience the positive charge too much. It's not going to experience it will experience lesser positive charge. That way it will be further away from the nucleus. Please write this down. I hope समझ में आया होगा. Please raise your hand also.
Just waiting for Rudita. चलिए, नेक्स्ट लिखेंगे आयनिक रिलेशन, दिस इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है ना, काफी अच्छा है, बहुत सिंपल लॉजिकल, बिल्कुल सारी चीजें। आयनिक रेडियस, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को ना हमेशा ना, लाइक यू ट्राई टू थिंक इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज ट्राइंग टू होल्ड द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, उसी चीज को हमेशा अगर ध्यान रखिएगा, देन इट्स गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर यू गाइस टू अंडरस्टैंड दिस होल कंप्लीट चैप्टर। Now, if I talk about ions, there are two types of ions. Tell me, what are the two types of ions? Guys. Cations and anions. Yeah, cations and anions. Cations and anions. You can have, you have anions. You have cations, right? So, how can we form anion? If we have a neutral atom and we add n number of electrons to it, then it will give an anion with n negative charge. How can we make a cation? I can make a cation if I have a neutral atom and I remove electrons from it. I will get A with n positive charge. If I have n positive charge, I will get n electrons away from this particular atom. Now, if I compare, this A is the parent atom. Huh? This is the parent. It's from parent group. The neutral atoms are बोलेंगे parent. So if I compare the parent and if I compare the parent and the anion, so obviously बात है, anion has more electrons, but the proton has not changed. The proton and the attracting capacity of the proton is still the same, but it has to attract a large number of electrons now. What's going to happen? It will not be able to attract that many electrons. The size will increase. So the parent atom will always be smaller than the anion. Okay? This is about what? It's about the radius. Size, size की अगर बात करें, then the anion will be always greater than the parent atom. But in cation, what's going to happen? In cation, we have already removed the electrons, and the proton and its attracting capacity has not changed. Now it has to attract lesser number of electrons. So it can easily attract those lesser number of electrons, and the size will shrink. So in this case, what's going to happen? The parent atom will have larger size than the cation. And this is also a talk about the radius or the size of the atom, or the size of the chemical species. So here we can say an ion is larger than parent. Okay. And here we can say cation is smaller than parent. Okay, makes sense, Chetan, please tell me. Does this make sense, yes or no? Copy this down, raise your hand once you're done. If you want any further explanation or कुछ चाहिए, please बताइए.
सबका हो गया? ठीक है, डन है। तो व्हाट वी कैन से इन जनरल हम क्या कह सकते हैं, एक और चीज लिख सकते हैं यहाँ पे, cation, then the neutral atom, and then the anion. This will be the overall. Like if I have a same, like if I have same atom, तो इस तरह का कुछ होगा हमारे पास, इसको हम बाद में भी लिखेंगे, बट यहाँ पे आप लिखेंगे, and then write in the cases of isoelectronic species. Isoelectronic species. क्या होता है isoelectronic species? I hope you guys know, but let us write once again. Ions or atoms of different element with same number of electrons. With same number of electrons. Okay. For example, दे देते हैं आप लोगों को थोड़ा सा. For example, if I talk about hydrogen negative and if I have helium, I have lithium positive, I have beryllium 2 positive, I have boron 3 positive. So all of these, if I talk about the number of electrons here, number of electrons in these cases, all of these are going to have 2 electrons only. Okay. Hydrogen has 1 electron, you add negative charge, that means you have added 1 electron, 2 electrons. Helium already has 2 electrons. Lithium has 3 electrons, if you remove 1, you will get 2. Beryllium has 4, if you remove 2, you will get 2. Boron has 5, if you remove 2, you will get, if you remove 3, you will get 2. All of these are what? All of these are isoelectronic species. Isoelectronic species. Now, in terms of isoelectronic species, what will be the variation in a group? First of all, you write variation in group. Variation in group. तो ग्रुप में क्या वेरिएशन होती है, ठीक है? बिकॉज इन अ ग्रुप यू आर ऑलवेज गोइंग टू गो डाउन. अगर हम ग्रुप की बात करें तो ग्रुप में क्या होगा, एक ग्रुप के अंदर you will always going to increase the ionic radius because the atomic number is going to increase, है ना? increase के shell number is going to increase basically. वेरिएशन इन ग्रुप की अगर हम बात करें आयंस में, not about isoelectronic ions but in general अगर हम आयंस की बात करें, then ionic radius increases, जैसे lithium positive, sodium positive, potassium positive, rubidium positive. In that case, ionic radius increases as we go down the group. Because the shell number increases. Okay. Second, variation in isoelectronic species. Variation in isoelectronic species. Okay. So you will see here I am going to write ions. यहाँ पे the atomic number or the number of protons that we are having and the number of electrons. Okay. So ions हम start करें 9 से N3 negative, then we followed by oxide, that is O2 negative, fluorine, that is F negative. Then let us suppose we have neon. चलिए neon ले लेते हैं. Neon को छोड़ दिए, लेकिन भाई because neon is going to be van der Waals radius, उसका बिल्कुल ही अलग आ जाएगा, ठीक है? तो neon को छोड़ देते हैं. Let's suppose we are having sodium positive and Mc2 positive and aluminium 3 positive. So if I compare the set, atomic number of hydrogen is 7 plus 7 because the effective nuclear charge nucleus में जो charge होगा that will be positive. This will be plus 8, this will be plus 9, this will be plus 11, this will be plus 12, and this will be plus
30. Number of electron in all of these cases are 10. I hope you can see that. Now, if you look at nitride ion अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्या दिखता है that you have only 7 protons and it has to hold 10 electrons. It will be very difficult. That is why the electrons will be going far away. Nitride ion will have the largest signs, followed by oxide ion, followed by fluoride ion, followed by sodium positive, followed by Mg positive, Mg2 positive, followed by aluminium 3 positive. I hope you can see the charges की वजह से यहाँ पे changes आ रहा है. एक और इससे कहा जा सकता है कनेक्टिंग द फर्स्ट पॉइंट अगेन. First point. Ionic radius increases as we go down the group because cell number increases. In a group, if you go down, for example, if you have lithium positive, sodium positive, potassium positive, तो ऐसे आप नीचे जाइएगा तो क्या होगा? You're going down the group. If you're going down the group, then the shell number will increase. If the shell number is higher, then the ionic radius will also be higher. You got it, Jaina? Yes, sir. So for isoelectronic species में अगर हम लिखें, then here we can write that in isoelectronic species only. जो ionic radius है आपका, ionic radius is directly proportional to an ionic charge, and we can say that it is ionic radius. It is inversely proportional to cationic charge. Raise your hand also. Just waiting for Susanna to also done. इस स्पेस में लिख लीजिएगा. For ions of same element, जो कि हमने पहले भी लिखा था. For ions of same element, anion की साइज ज्यादा होगी, न्यूट्रल की साइज उसके बाद, न्यूट्रल will be smaller than anion, and the smallest will be cation. And then write a question. Arrange the following in increasing order.
of radius. ये लिखिएगा I positive, I negative. ये लिखिएगा nitrogen, oxygen, phosphorus. से लिखिएगा argon, K positive and calcium positive. ये calcium 2 positive कर दीजिए. हो जाएगा. Okay, look at the notes, try to understand the theory and do the questions. Huh? You can take the help of the notes. I will explain, obviously I'm going to explain, but it will be really nice if you can crack it yourself. ठीक है, लर्निंग वहीं पे है, हम तो बार बार आपको बता देंगे, लेकिन अभी अगर आपने सही कर लिया ना, then it will be stuck in your head. ग्राफ सही है, पहला सही, वेरी गुड. You identified the problem correctly. Greg has sent the answer for the first one. I think first one is quite doable. Iodine है, कौन सा टेस्ट लगेगा, like all of these things are there. You just need to crack it. और फिर से एक बार आपको most सही से समझना है चीजों को. आ जाए.
By what happened? देखिए आंसर देखिए ना, इतना टेंशन लग रहा है. How many of you are not? ठीक है, कर रहे हैं, करते हो. If you're not able to understand, कुछ भी समझ में नहीं आया तो हाथ रेज करिए प्लीज. Yes, very good, correct. Correct, 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 correct. बहुत अच्छा. I'm a very good. जैनब देखिए ना, आंसर देखिए. श्योर नहीं है तो क्या हुआ, मतलब देखिए आंसर जो भी आपको समझ में आ रहा है. इफ यू कैन आइडेंटिफाई द पोजीशंस ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फास्फोरस, तो फिर आसानी से हो जाएगा. द पीरियोडिक टेबल, इफ यू नो किसके बगल में कौन आता है और किसके नीचे कौन आता है, देन यू कैन इजीली राइट द आंसर. नहीं तो फिर सी वाला करें. अच्छा, इफ यू आर नॉट एबल टू डू एनी वन ऑफ देम, प्लीज रेज योर हैंड. Jasleen, Jovita, I have not get any answer or a hint that you are also doing the question. चलो भाई 2 मिनट और देंगे हम यार, प्लीज आंसर भेजिए ना. जैनब प्लीज आंसर भेजिए, इतना टाइम मत लगाइए आप. ठीक, इफ यू वेट टू गेट कंफर्मेशन ना, फिर लर्निंग नहीं होगी आप. ठीक है, डोंट वेट फॉर कंफर्मेशन, ट्राई टू थिंक ऑफ एवरीथिंग, कुछ गलत तो नहीं है ना. एंड वंस यू आर श्योर दैट इट इज कंप्लीटली राइट, सेंड मी आंसर. अगर आप कंफ्यूज है तो फिर वहां पे देखिए गैप कहां पे आ रहा है, एंड देन ट्राई टू रीड इन द थ्योरी. ऑल ऑफ दीस केसेस आर प्रेजेंट. Jupiter and Justine, can you please turn your mic on? Jupiter and Justine, आप बताएं, नहीं हो रहा है क्या बिल्कुल? Are you not able to do? Sir, I did it. I can't find my phone right now. Can I type in the chat? हाँ, sure, type in the chat. ठीक है, सानंद ने भेजा है. Jupiter, what about you? Sir, I will send in the chat box. Okay. ये तो सही है आपका जैनब. बी भी सही है आपका, वेरी गुड. सी में थोड़ा देखिए एक बार. सी थोड़ा सा देखिए कैसे किया आपने, क्या लॉजिक लगाया है आपने. लुक एट द चार्जेस, कुछ आपको समझ में आएगा. So there's a mistake. Calcium should be आपको on place of phosphorus. फॉस्फोरस क्या है भाई? पोटेशियम Yeah, potassium, yes, है sir. ना. कैल्शियम स्मॉल. ठीक है, खुद से करने की बात ही कुछ और होती है. टीचर बता दिया, हाँ ऐसे होगा, उसकी बात अलग है. यस, जस्टिन करेक्ट, वेरी गुड. ये यूज करें. बिल्कुल. अब ना आपको लाइक फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर हम समझ सकते हैं, बट अब जो है ना आपका ब्रेन बिल्कुल आपका 11th क्लास के बच्चे के जैसा हो चुका है. ठीक है, you have understood a few Nobel Prize winning experiments. You have done a lot of calculation regarding to mole. And you have understood the quantum numbers. You have understood how to write the electronic configuration. You are open for. अब आपका दिमाग में धीरे-धीरे अब आपको क्या है, like you should be confident about your answers. You should start knowing in and out of a question. कि इस सवाल में क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल आई लिखा तो आपको नोट्स में टैली कर लेना चाहिए कि इट इज आयंस फॉर सेम एलिमेंट है. सेम एलिमेंट के बारे में ये पूछ रहे हैं यहाँ पे. चलिए, अभी तक जस्टिन का एक ही आंसर आया है. Those who are not able to do the B question, I can understand you will not understand the position of the elements in the periodic table. Please attempt the C. हाँ, ये सही है, very good. Correct, Jastine. Yes, Shobita, that is also correct. इसी यही सब आ रहा है उसको. चलिए देखिए, I'm writing the answers now. है ना, बहुत टाइम लगा दिया आप लोगों ने. So I'm writing the answers. इसका आंसर क्या होगा? देखिए, I नेगेटिव सबसे बड़ा कौन होगा? Largest will be anion, neutral, then cation. Cation होगा सबसे छोटा, उसके बाद न्यूट्रल, उसके बाद अनायन. यहाँ पे अच्छा नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन है. नाइट्रोजन के नीचे कौन आता है? फॉस्फोरस. If you look here, if I compare nitrogen and oxygen will be larger because along the period left to right, the size
सिंपल लिख दिया हमने। नाइट्रोजन विल बी लार्जर बिकॉज साइज डिक्रीजेस। और अगर हम नाइट्रोजन और फास्फोरस की बात करें तो ऑब्वियसली फास्फोरस इज गोइंग टू बी लार्जर बिकॉज फास्फोरस इज डाउन द ग्रुप। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट ऑक्सीजन, फिर होगा नाइट्रोजन, उसके बाद होगा फास्फोरस, एंड लास्ट यहाँ पे जिसमें ज्यादा लाइक ऑल ऑफ दीज आर गोइंग टू हैव, आर्गन के पास 18 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 18 और इसके पास भी 18, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। So calcium is having 2 positive charge, that's why it will be smallest, followed by potassium positive and followed by argon. Argon, हाँ ठीक है, just incorrect. Please copy this down. और उसके बाद आपका देखते हैं होमवर्क भी बता देते हैं आपको। होमवर्क कैसे मिलेगा, टाइप किया हुआ इन पीडीएफ एंड एवरीथिंग। होमवर्क इज एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.9 to 3.13, 3.9 to 3.13। ठीक है, आई होप लिखे होगा आपने। अब हम लोग थोड़ा सा आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में लिखा रहा है, यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, बस कुछ चीजों को नोट डाउन कर लीजिए सो दैट इट विल बी इजियर फॉर अस टू डू द एक्सप्लेनेशन पार्ट ऑन द थर्सडे क्लास। तो प्लीज राइट द हेडिंग आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सबसे पहली चीज एंथैल्पी क्या होती है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इट इज रिटन एज डेल्टा एच आई ई। ठीक है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी और डेल्टा एच आई, ठीक है, और जस्ट आई ई, ये सारी की सारी चीजें क्या डिनोट कर रही है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो आई में राइट एनी वन ऑफ देम, ठीक है, इनमें से तीनों में से कोई भी लिख सकते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज एंथैल्पी? एंथैल्पी व्हाट इज डिनोटेड बाय एच, इट इज द एनर्जी मेजरमेंट, energy measurement keeping the pressure constant, keeping the pressure constant। ठीक है, जब एनर्जी को मेजर किया जाता है वॉल्यूम कांस्टेंट करके, उसमें एनर्जी बोला जाता है। व्हेन एनर्जी इज मेजर्ड कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट, उसको एंथैल्पी बोला जाता है। वी विल गो इनटू डिटेल ऑफ द एंथैल्पी इन द चैप्टर थर्मोडायनामिक्स। अभी आपको बस ये समझना है कि एनर्जी क्या है, एंथैल्पी मतलब एनर्जी ही है, ठीक है, एंड उसी तरह से लिखा भी जाएगा। व्हाट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी? द एनर्जी रिक्वायर्ड to remove most loosely bound electron from a neutral isolated gaseous atom is called ionization enthalpy। Energy is always required for ionization, that is, ionization is endothermic process। When writing can get raise hand if you कहती हैं एंथैल्पी तो आपने लिख ही लिया होगा। अभी सिर्फ लिखना, आपको समझाएंगे नहीं, आपको समझना भी नहीं, बस एक चीज समझ लीजिए, अगर आप एनर्जी किसी को दे रहे हैं तो उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है। देयरफॉर आयोनाइजेशन एंथैल्पी, एनर्जी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड ना, तो
ठीक एनर्जी चाहिए, आप उसको एनर्जी दीजिएगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी विल always have positive sign, always have positive sign, मतलब बढ़ेगी है ना। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, वो एनर्जी आपकी बढ़ाने का काम करती है, एनर्जी बढ़ाएगी, दीजिएगा तभी तो मिलेगा इलेक्ट्रॉन। और भी इसमें थोड़ी थोड़ी चीजें आप लिख सकते हैं अभी बिना समझिए बिल्कुल। अगर एटम ए आपके पास और इसमें से आपने अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो विल गेट अ पॉजिटिव चार्ज प्लस वन इलेक्ट्रॉन, एंड दिस प्रोसेस विल बी नोन एज द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, और यहाँ पे the energy required will be IE1. Now if you have A positive and if you are going to remove electron from A positive, that will be second ionization enthalpy and you will get A2 positive, और यहाँ से भी आपके पास एक इलेक्ट्रॉन निकले, so it's the second ionization enthalpy। ठीक है, you will have A2 positive, you can remove electron from here also, you will get A3 positive plus electron, it is the third ionization enthalpy। ठीक है, so on। तो ये तो एक रेजर का इंडिकेटर। Yopita, waiting for you. So that's it for today, and we are going to meet